Find the height of tide at 1200 hours GMT at Jentbrug, ATT Volume 1 on 6th day of March 1992. So 1200 GMT was the time and Jentbrug was the port. So we went into the geographical index. हमने सबसे पहले तो ये देखा that this particular place is a secondary port. We got the number from here 1539. Then we went into the part 2 of the tide table और part 2 से हमें इस port का डाटा मिल गया. We got the time differences and the height differences. इसकी standard port भी हमें मिल गई. Antwerp is the standard port and we got the seasonal corrections. Then we used our table, this particular table, which we fill up to get the tidal data of the secondary port. हमने इसमें standard port का data fill up किया, फिर इसमें हमने standard port के tides को fill up किया. Now since we wanted the height of tide for 1300 hours, हमने सिर्फ वही टाइम्स पिकअप किए जिनके बीच में ये 1300 का टाइम आ रहा था. So when the data was picked up, we applied the seasonal correction. पहले हमने standard port की seasonal correction को subtract किया. Then we applied the differences, time difference, height difference. We applied the seasonal correction for the secondary port and we got the tidal data for Jentbrug. This was the answer which we got. 845, the height of tide is 2 meters. 1731, the height of tide is 0 meters. So up to here, any doubt in your mind, beta? Okay, great. So once we got these figures, इसके बाद बेटा हमें 1300 टाइम के लिए हाइट चाहिए थी. So as we do in ATT1, we have to go to that standard port graph. उसी ग्राफ से हमें intermediate times की हाइट मिलती है. So in this case, Antwerp is our standard port. So we picked up the graph of Antwerp. इस Antwerp के ग्राफ में हमने बेटा लो वाटर और हाई वाटर को फिलअप किया. ओके, सो वी फिल्ड अप द लो वाटर एंड हाई वाटर हियर. उससे हमें इंटरपोलेशन लाइन मिल गई एंड आवर हाइट रिक्वायर्ड आवर टाइम रिक्वायर्ड वाज 1300 आवर्स. सो हमने देखा कि हाई वाटर टाइम से ये कितना दूर है. हाई वाटर इज 846. सो इंटरवल फ्रॉम हाई वाटर कम्स आउट टू बी 4 hours 15 minutes. सो हमने 4 hours 15 minutes after high water, that means in the plus zone, ये point identify किया. From this point we went upwards and wherever this line touched the dotted line is the Neep's range line. हमारी जो range है वो बहुत कम थी, हमारी range 2 meters थी. But the range which is here, Neep's range, minimum range is 4 meters. So we touched the 4 meters range, went up to our interpolation line and went on top. And this gave us the height of tide at 1300 hours, which came out to be 0.55 meters. So this was the question which we did, beta. Have a good look at this. Let me know अगर किसी भी point पे आपको कोई doubt आ रहा है. और अगर सेकेंडरी पोर्ट में हमें कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए, इस केस में उन्होंने हमें 1300 का टाइम दिया, तो उस टाइम से हमें हाइट ऑफ टाइड कैसे निकालनी है वो भी हमने देखा. अब एक और एग्जाम्पल ट्राई आउट करते हैं. अभी जो हमने निकाला है, टाइम हमें गिवन था और हमने हाइट ऑफ टाइड का पता किया है. अब हम बिल्कुल इससे ऑपोजिट वाला क्वेश्चन करते हैं, इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में करेंगे. हमें अब उन्होंने हाइट ऑफ टाइड दे रखी है, हमें उन्होंने बता दिया है कि हाइट ऑफ टाइड इतनी चाहिए और निकालना क्या है, हमें टाइम निकालना है. एट व्हाट टाइम
that height of tide will be attained. So shall we go ahead? अगले क्वेश्चन पे चलें बेटा. Is it clear up to here? Yes, sir. Very good. Okay, so this is our next type बेटा. ये इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है जो हमने अभी किया है. A vessel needs to depart Jentbrug, सेम पोर्ट. एक शिप ने वहां से सेल आउट करना है. 6 मार्च 1992 की डेट है जिसके लिए हमने अभी हाइट ऑफ टाइड कैलकुलेट की. The minimum height of tide required to sail out safely is 1.5 meters. So हमें 1.5 मीटर की हाइट ऑफ टाइड चाहिए. Find the last time to sail out during the AM, that is forenoon hours. एक शिप है, उसे सेल आउट करना है, कार्गो ऑपरेशन खत्म हो रहा है उसका. अब जो मास्टर है उसको पता है कि मुझे 1.5 मीटर की हाइट ऑफ टाइड चाहिए. ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट कि मैं 12 बजे से पहले सेल आउट करना है शिप को. व्हाट इज द लास्ट टाइम व्हेन आई कैन सेल आउट? कितना टाइम है हमारे पास सेलिंग आउट करने के लिए? दिस इज द क्वेश्चन. सो एवरीबडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन बेटा? Yes, sir. वेरी गुड. लेट्स नाउ सी हाउ डू वी सॉल्व इट. किसी के माइंड में आ रहा है बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर वैसे ही जैसे हमने पिछला किया था, बस लास्ट में जब टेबल बनाएंगे, मतलब वो हाई वाटर लो वाटर का बना के, तो वहां से टाइम निकाल लेंगे ग्राफ से. राइट बेटा, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में एंटर करेंगे. ओनली थिंग इज कि इस बार हम एंटर करेंगे टाइम से, सॉरी, इस बार हम एंटर करेंगे हाइट से एंड वी गो टू द टाइम. पिछली बार हमने एंटर किया था टाइम के साथ और हमें हाइट मिली थी. इस बार हम एंटर करेंगे हाइट के साथ और हमें टाइम मिल जाएगा. सो लेट्स सी दैट. Plug all the gaps possible. A vessel needs to depart Jenbrug ATT Volume 1 on 6th March 1992. Minimum height of tide required to sail out safely is 1.5 meters. Find the last time to sail out during the AM or the forenoon hours when you have the height of tide as 1.5 meters. We shall use the same information. Required time of height now is when tide is 1.5 meters on 6th March at Jenbrug during the following tides. Why? Because it's the last time. Last time of sailing has to be on the ebb tide. And we know it's ebb tide in the forenoon session. Why? Because high water was at 8:45, low water is at 17:31. So we use the Antwerp curve. Why? Because that's a standard port. We have the high water at 8:45, height 2 meters, low water 17:31, height 0, duration of tide 8:46, range of tide 2 meters. Now we go to the diagram, we mark off the interpolation curve. You can see the interpolation curve coming up here. Now the required height of tide is 1.5 meters. So we start from out here. Required height of tide 1.5 meters. We come vertically down to the interpolation line. And then we turn towards the curve. Now which side do we stop? Now it shall be after high water. Why? Because it's a ebb tide. So we go to the right of the curve and don't stop to the left. Which curve do we go to? Our range is 2 meters. Neap range is 4 meters. So we go up to the neap curve. Then we turn vertically downwards and hit the baseline. And what do we read here? We read here that the interval is 1 hour 40 minutes after high water. That means the time when the height of tide shall be 1.5 meters on the ebb tide in the morning shall be 1 hour 40 minutes after high water. And what is the time of high water? 8:45. So therefore the last time when the vessel can sail out
with a height of tide of 1.5 meters shall be 8:45 plus this interval of 1 hour 40 minutes, and that time shall be 10:25 hours. Okay, so just have a good look at this working beta. Let me know any doubts which come in your mind. सर एक बार ये अर्लीस्ट और लास्ट टाइम वाला बता दो सर, ये यूपीएससी के रेफरेंस में दे रहे हैं ना सर हम? बेटा एक तो आपको डाउट है अर्लीस्ट और लास्ट में, वो मैं अभी बता देता हूं आपको। ध्यान से सुनना अभी। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखें। उन्होंने हमसे ये पूछा है फाइंड द लास्ट टाइम टू सेल आउट ड्यूरिंग द AM आवर्स। मींस 12 बजे से पहले लास्ट टाइम कौन सा है जिसपे हम लोग सेल आउट कर सकते हैं। करेक्ट। अब हमें यहां पता चला कि 10:25 आवर्स पे हाइट ऑफ टाइड 1.5 मीटर है जो हमें चाहिए थी। अगर 10:25 के 10:26 हो जाते हैं तो बेटा आप मुझे बताओ कि हाइट ऑफ टाइड 1.5 से कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी सर। कम हो जाएगी, हो सकता है 1.4 हो जाए। तो अगर ये कम होगी तो हम सेल आउट नहीं कर पाएंगे। राइट बेटा? यस सर। सो 10:25 के बाद 12 बजे तक सेल आउट करने के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 10:25 पे हाइट ऑफ टाइड 1.5 मीटर होने वाली है। अब बेटा मुझे ये बताओ कि 10:25 से पहले 10:24 पे हाइट ऑफ टाइड 1.5 मीटर से कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी सर। ज्यादा होगी। 10:24 पे हाइट इससे ज्यादा होगी, 1.51 हो सकती है, 1.6 हो सकती है। तो उसमें हम सेल आउट कर सकते हैं? यस सर। बिल्कुल सही है, उसमें सेल आउट कर सकते हैं। कभी भी हाइट ऑफ टाइड 1.5 मीटर से ज्यादा होगी तो हम सेल आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 10:25 से पहले तो हम कभी भी सेल आउट कर लेंगे, लेकिन 10:25 के बाद सेल आउट नहीं कर पाएंगे। यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द लास्ट टाइम टू सेल। दैट इज व्हाई द आंसर इज 10:25। अब ये बात क्लियर हुई बेटा? सर हमने बेटा ATT 1 एडमिरल्टी टाइड टेबल 1 इसकी सेकेंडरी पोर्ट का हाइट ऑफ टाइड निकालना सीखा है। हमने सबसे पहले तो ये सीखा कि सेकेंडरी पोर्ट के डाटा को कैसे कैप्चर करते हैं। हाइट डिफरेंस, टाइम डिफरेंस लेते हैं, इंटरपोलेशन करते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी पोर्ट के टाइम्स आते हैं और हाइट्स आ जाती हैं। फिर हमने ये भी देखा कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए निकालना हो हाइट को तो हम स्टैंडर्ड पोर्ट का ग्राफ यूज करके उसे निकाल सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि अगर हमें कोई हाइट दे दी जाए और उसका टाइम निकालना हो तो वो भी हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। So with this we basically complete the Admiralty Tide Table 1. सेकेंडरी पोर्ट, स्टैंडर्ड पोर्ट ये कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है एडमिरल्टी टाइड टेबल्स वॉल्यूम 2 एंड 3 इनकी सेकेंडरी पोर्ट्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो शैल वी मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन बेटा? यस सर। ओके, सो जस्ट कीप द टाइड टेबल्स क्लोज टू यू। हम लोग अभी एक पर्टिकुलर पोर्ट एक क्वेश्चन पिकअप करेंगे और पर्टिकुलर पोर्ट का जो डिटेल है वो निकालेंगे। दिस क्वेश्चन इज इजियर देन ATT 1। ATT 1 में हमने बहुत इंटरपोलेशन की है, वहां पे इंटरपोलेशन कम हो जाती है। ओके, अभी आप देखोगे डिफरेंस। ATT 2 एंड 3 का क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा सिंपल है। सो लेट मी शो यू द ATT 2 and 92 at Navlakhi. So can you open up the tide table and tell me where does this Navlakhi come in the geographical index? What is the number of this port? Sir, 4331, sir. Very good, beta. Great. Let's see it here also. Waters, we shall also take examples for the secondary ports in the non-European waters. So let's take this example.
Find the times and heights of high water and low water on 10th April 1992 at Navalaki, and Navalaki is in Admiralty Tide Tables Volume 2. So we go to the geographical index of Volume 2, ATT Volume 2, which is in alphabetical order. We reach Navalaki, and we find Navalaki is not in bold and capitals. So it happens to be a secondary port whose number is 4331. So Navalaki, port number 4331, is found to be a secondary port. Now beta, with this number, can you go to part 2 and see कि ये जो नवलखी पोर्ट है इसका स्टैंडर्ड पोर्ट कौन सा है? बंदर शाहिद, कराची, 2 ऑप्शन आ गए बेटा, और बताओ. सो थर्ड ऑप्शन आ गया बॉम्बे. हाँ सर, बॉम्बे में आ रहा है. ये सर बॉम्बे आ रहा है. ये ऑल राइट, ठीक है बेटा, लेट्स सी. From the geographical index of ATT Volume 2. Go to ATT Volume 2, Part 2, to the page which contains details for Navalaki, where the information is in ascending port number. So we reach 4331. So here, this is the page which contains data regarding the time and height difference. On this page, here we have 4331 Navalaki. We go to the top of this subsection here, and we find that Bombay happens to be the standard port for Navalaki. So बेटा, जिनको और पोर्ट मिल रही थी, आर यू ओके नाउ विद बॉम्बे? डाउट सॉर्ट आउट हो गया या अभी भी है? Yes, sir. Okay, very good beta. So we have the secondary port Navlakhi. We know its standard port is Bombay. Let's proceed ahead now. And port number for Bombay happens to be 4359, which is given here. Seasonal correction for these ports is from the adjacent page, and that has been now brought in here on the screen. So we have the seasonal correction, which applies to this set of ports. And now we identify the information from this page, which we are going to use further, and we'll zoom it in and we'll use it for our further working. So beta, have a look at the seasonal correction also. 4331 और 4359, इन दोनों की seasonal correction हमें चाहिए. So just see, is it there on the same page or the next page? नेक्स्ट पेज पे है सर. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. दोनों नंबर्स की सीजनल करेक्शन अवेलेबल है? यस सर. वेरी गुड बेटा. सो इन दिस केस यू विल सी दोनों की जो सीजनल करेक्शन है वो अलग अलग कॉलम में दी गई है, राइट? यस सर. राइट, वेरी गुड. So let's proceed ahead. The information we shall be using would be for the standard port Bombay. You can see it here. For the secondary port Navalaki, which is here, height and time differences, and also the seasonal corrections. So now we have on the screen the relevant information which is zoomed in. We have the information for the standard port Bombay. We have the data for Navalaki, and we have the seasonal corrections. Here we see that the time zone for Navalaki happens to be minus 0530 hours. Tide is required for 10th April 1992 at Navalaki. Time difference in tides between the standard and the secondary ports may cause a change in dates of the corresponding tides between the standard and the secondary port. So we'll have to be wary of this fact. So it is better to also consider the tide timings at the standard port over the dates on either side of the date in question. That means one day before the date required and one day after that. And then we can rule out whichever tides are not applicable.
Okay, so everybody comfortable with these three data items, beta? Standard port Bombay, secondary port Navlakhi, and seasonal correction. ये तीनों आपको मिल गए हैं? Anybody having any problems up to here? नो सर, ओके। वेरी गुड बेटा। अब बेटा हम नेक्स्ट जाएंगे बॉम्बे पोर्ट के डेली पेज पे, और वहाँ पे हम 10 अप्रैल 1992 ये वाली डेट को देखेंगे। हो सकता है इससे एक दिन पहले या एक दिन बाद के टाइम भी हमें लेने पड़े। सो लेट अस गो टू द बॉम्बे पोर्ट पेज एंड फाइंड आउट द 10 अप्रैल 1992। We shall continue using the same tidal prediction form that we had used for secondary ports in the European waters. So this tidal prediction form needs no introduction. So we shall be using it for calculations of tides. बेटा इफ यू वांट टू मेक द टेबल यू कैन मेक इट इन योर नोटबुक। यही टेबल हमारे वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 में भी यूज होता है, सेम टेबल। सो यू कैन मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक। Let me know once secondary ports in non-European waters as well. So we have the first part of the tidal prediction form. Obviously, this will be filled up from the data for the standard and the secondary port. The relevant data is already on the screens. So the standard port happens to be Bombay 4359. We fill it up here. What do we need? We need the time and height of high water and low water. At which port? We need it at the secondary port, that is Navalaki 4331. So we fill it up here. The date on which it is required is 10th April 1992. The time zone at Navalaki is here. It's minus 0530 hours. So we go to the next part of the tidal prediction form, which talks about the applicable time and height of high and low water at the standard port. Since we need it for 10th April at Navalaki, as said earlier, we shall just glance through. Okay, so beta you can see the Bombay port data for 3 dates 9, 10 and 11. अब बेटा आप मुझे बता सकते हो कि हमें कौन कौन सा टाइम पिक करना पड़ेगा। 10th में 3 टाइम दे रखे हैं, इनको छोड़ के और कौन कौन सा टाइम पिक करना पड़ेगा? 9th का या 11th का कोई टाइम आएगा बेटा? हैव ए लुक एट द टाइम डिफरेंस। 2246 वाला आएगा सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो यू आर राइट, 9 को जो 2246 वाला टाइम है, आप देखोगे हमारा जो टाइम डिफरेंस है दैट इज क्लोज टू 3 आवर्स। 250 to 330 इज द रेंज। सो जब हम 2246 में ये टाइम इंटरवल को ऐड करेंगे तो ये 10th डेट में शिफ्ट हो जाएगा। सो 2246 आएगा और 10th के तीनों टाइम्स आ जाएंगे। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस बेटा? यस सर। वेरी गुड बेटा, लेट्स गो। Tides 1 day before that. एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे। हाँ बोलो बेटा। सर मान लो कि हमें 10th में 4 टाइम दिए होते, 22 समथिंग कुछ टाइम होता नीचे लास्ट में 4th वाला, तो उस केस में मैं 11th में कर सकता हूँ ना? ओके बेटा, तो तुम बेटा मुझे बताओ कि 10th का जो लास्ट टाइम दे रखा है वो कौन सा टाइम दिया हुआ है? कोई भी टाइम ऑफ योर चॉइस बताओ। 2230। ओके, 2230 दे रखा है। अब हमें पता है कि 2230 टाइम को अगर हमने पिक किया और उसमें हमने मिनिमम जो 2 आवर 50 मिनट का इंटरवल है वो डाला, तो वो नेक्स्ट डे में जंप होने वाला है, तो वो तो 11th डे में आ जाएगा नवलखी के लिए, राइट? यस सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, मान लो किसी भी केस में ऐसा हो सकता है 4 से ज्यादा भी इंटरवल बन जाए? 4 से ज्यादा टाइम आपको आई डाउट बेटा। 3 टाइम तो हो सकते हैं, बट 4 से ज्यादा टाइम जो है आई डाउट कि आपको 4 से ज्यादा टाइम कहीं पे मिलेंगे। यू विल नॉट गेट इट। ओके सर। कोई 1% चांस समवेयर बेटा, किसी न किसी पोर्ट में अगर कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन आ जाए
तो ये चीज हो सकती है, बट वेरी वेरी रेयर बेटा। आपके 3 टाइम तो हो सकते हैं किसी भी पोर्ट में, पर 4 होना इज वेरी वेरी रेयर, वेरी रेयर। ओके बेटा, क्लियर? ओके सर, यस सर। ओके, लेट्स मूव अहेड। Now, if you see the time difference here, it's at the secondary port, the tides are lagging behind by about 3 hours. So if you apply plus 3 hours here, you see that the tides that shall be applicable to us would be this one, that is low water at 22:46 on 9th of April. And then you'll have these 3 tides. Why? Because if we apply plus 2 or plus 3 hours to this one, this will go to date 11th. We are only interested in tides on 10th April. So now we have the low water at 22:46. The height of low water is 2 meters. We have a high water at 0400 hours. Height is 3.3 meters. We have a low water at 10:20. Height 1.3. We have a high water at 17:49 and height is 3.7. Next, we have to algebraically subtract the seasonal correction at the standard port, which is Bombay. Here is the seasonal change table. Bombay number is 4359, which lies in this range, 4355 to 4363. So what is the seasonal correction you are getting beta for April? सर बोलो बेटा। सर पिछली स्लाइड करोगे, और जो टाइम देखना था सर। ओके, पीछे वाली कर देता हूं बेटा। ये लो बेटा। सर पिछले 2 to 46 इसलिए है क्योंकि आगे 3 है, तो पिछले का लो ले लिया। नहीं बेटा, नहीं, इसलिए नहीं लिया है कि आगे 3 है, हमें उसके 4 बनाने हैं। नहीं, इसके लिए नहीं लिया है। हमने इसलिए लिया है, आप इनके टाइम डिफरेंस देखो। नवलखी के जो टाइम डिफरेंस यहां दिख रहे हैं आपको, क्या टाइम डिफरेंस है बेटा? सर 250 का है और है 330 का। वेरी गुड। मिनिमम अगर मैं 250 का टाइम भी ले लूं, 2 घंटे 50 मिनट, मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा बॉम्बे के टाइम में, करेक्ट? अगर मैं इसे बॉम्बे के टाइम में ऐड करता हूं, 2246 के टाइम पे अगर मैं 2 आवर 50 मिनट को ऐड करता हूं, तो मुझे बताओ ये जो टाइम आएगा ये 9th डे में आएगा या 10th में चला जाएगा? सर ये 10th में आ जाएगा। राइट, और हमसे उसने 10th के टाइड्स निकालने को बोला है, इसलिए हमने 2246 को इंक्लूड किया है। ये सर MHW के टाइम डिफरेंस से हमने लिया है, उसको ऐड करना है, तो फिर तभी ऐड किया इसको। नेक्स्ट डे में आ गया 10th में। राइट बेटा, राइट। एक्चुअली इस केस में जो 2246 पे लो वाटर है, अगर आप देखो 2.0 मीटर, इट इज द लो वाटर। इस केस में जो एडिशन होगी वो 3 आवर 30 मिनट की होगी। ओके, मैंने तो दोनों में से मिनिमम फिगर पिक कर ली थी कि कोई भी अगर होता तो हम तो नेक्स्ट डे में जा ही रहे थे, बट एक्चुअली इस केस में जो ऐड होगा वो 330 आवर ऐड होगा, और जब इसमें ऐड होगा तो ये 10th डेट में चला जाएगा। ठीक है सर। ओके, very good beta. So we come to the seasonal correction now. What is the seasonal correction for Bombay beta in April? Sir, 0.0. Very good. 59, which lies in this range, 4355 to 4363. Month in question is April. Obviously, the seasonal correction for Bombay happens to be 0, and we apply it here. Since it's 0, it may not make any difference, but please remember, we have to algebraically subtract the seasonal change for the standard port. Next are the differences in time and height. Let's deal with the time difference first. Data for the standard and the secondary port we are already familiar with. Now here is the time difference for the mean high water. Okay,
सो अब देखो बेटा, हमारा हाई वाटर का टाइम था 0400, ये पहला हाई वाटर है। दूसरे हाई वाटर का टाइम था 1749। अब यहाँ पे इन्होंने हाई वाटर के लिए एक ही करेक्शन दे रखी है, वो है +2 hour 50 minute। इफ यू रिमेंबर ATT 1 में बेटा हमें कितनी करेक्शन दे रखी थी उन्होंने? 4 सर। हाँ, 2 करेक्शन थी और 4 टाइम थे ऊपर, और नीचे 2 करेक्शंस थी। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही करेक्शन है। सो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरपोलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी हाई वाटर टाइम होने दो, उसमें हमेशा 2 hour 50 minute ही ऐड होगा। सो क्वेश्चन सिंपल हो गया। यस सर। राइट, सो लेट्स ऐड इट। which is +2 hours 50 minutes. Unlike the European waters, where this time difference was to be interpolated, here we do not need any interpolation. It's for mean high water. So the time difference for mean high water is +2 hours 50 minutes. So we apply +2 hours 50 minutes of time difference. You can see high water is here, so time difference +2 hours 50 minutes. High water is here, time difference is +2 hours 50 minutes. बेटा दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ATT 1 एंड 2-3। 1 में हमें टाइम डिफरेंस के लिए इंटरपोलेशन करनी पड़ती है, 2 एंड 3 में हमें टाइम डिफरेंस के लिए कोई भी इंटरपोलेशन नहीं करनी पड़ती है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। सो लेट्स प्रोसीड। Exactly the same way, we have the time difference for mean low water, and the time difference happens to be +3 hours 30 minutes, which obviously will be filled in here. And also at the next low water out here, the time difference happens to be +3 hours and 30 minutes. Now we come to the height differences from the same data. It's more or less similar to what we did in secondary ports at the European waters. इफ यू लुक एट हाइट डिफरेंसेस बेटा, ये बिल्कुल सेम है जैसा ATT 1 में था। हमें उन्होंने 2 हाई वाटर दे रखे हैं, 3.3 एंड 4.4, दोनों के लिए अलग अलग करेक्शन है। सो हमें अपने हाई वाटर के लिए इसे इंटरपोलेट करना है। सो एग्जैक्टली सेम एज वी डिड इन ATT 1। We have the height difference for mean high water spring and mean high water neap. We can make a table out here. You can see at the standard port, when the mean high water spring is 4.4 meters, the height difference at the secondary port is +2.8 meters. And when at high water, its mean high water neap and height is 3.3 meters, the height difference happens to be +2.9 meters. And now for our height of high water at the standard port, we shall interpolate as well as extrapolate if the need be. What is our first high water? Let's see. Our first high water is 3.3 meters. That 3.3 meters is same as mean high water neap. Obviously, the height difference shall be +2.9, and you can see +2.9 coming in here. So beta, is this okay up to here? This was simple. It was matching with one of the values. Yes, sir. Very good. What is our next high water? It's 3.7. So can you tell me beta, what should be the figure for 3.7? 2.9 ही आ रही है, बहुत कम डिफरेंस है। That's right. The difference between 2.8 and 2.9. So nothing, no difference, almost 0.1. Right. 3.7 shall lie between 3.3 and 4.4. We shall interpolate, and the height difference comes to +2.9, and that gets filled in here. Exactly the same way, we shall deal with height differences at low water.
we have the height difference for mean low water neaps and mean low water spring. So we replicate a similar table out here. When its mean low water neap at the standard port is 1.9, the height difference is 0.2 meters plus 0.2 meters. When its mean low water spring of 0.8 meters at the standard port, the height difference happens to be nil. What is our low water? Our low water is 2 meters. Where would it fit in? It would fit in somewhere here. So it needs extrapolation. When we extrapolate, we get the height difference to be 0.2 meters plus 0.2. That gets filled in here. Our second low water is 1.3 meters. 1.3 meters will fall between these two. And when we interpolate, we get the height difference as plus 0.1 meters, which gets filled in here. All okay up to here, beta? All clear? Sir. Very good, beta. Let's proceed ahead. Lastly, we have to algebraically add. Please back, sir. बोलो बेटा. Please back करना सर, वो लिख रहा था सर. Okay, okay. ये लो बेटा. Okay, sir. Continue, sir. Thank you, sir. Okay. Here. Lastly, we have to algebraically add, I repeat, the seasonal change for the secondary port. We have the seasonal change table. Our secondary port number is 4331 for Navalaki. 4331 would lie in this range of 4328 to 4335. Month in question happens to be April. And we get the seasonal correction as again nil. It gets filled in here. In this case, the seasonal correction being 0 may not make any difference. But again, just to repeat, seasonal change for secondary port has to be algebraically added. And now we are ready to get the time of high and low water and height of high and low water at a secondary port on 10th April 1992. You can see when the time difference is allowed for this low water at 22:46 on 9th, it becomes 02:16 on 10th of April. So we get these are the times of low water, high water, low water, high water, and their corresponding heights we get here. We can tabulate them here. The tidal predictions for Navalaki on 10th April. At 02:16, we shall have a low water of 2.2 meters. At 0650, we shall have a high water of 6.2 meters. Then at 1350, we shall have a low water of 1.4 meters. We tabulate it here. And lastly, at 2039, we shall have a high water of 6.6 meters, which gets tabulated here. So these are the times and heights of tides at Navalaki on 10th April 1992. Okay, beta. So this completes our question for Navalaki. So you see it is exactly same as ATT1 with only one difference, which makes the question easier for us, that there is no interpolation for time differences. So 2 and 3 की ports की बेटा calculation जो है वो बिल्कुल same है, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो, दोनों बिल्कुल same method से की जाती हैं. There is no difference at all. So with this, basically we complete the tidal calculation for all the scenarios: standard port, secondary port, ATT1 and ATT2 and 3.